With each passing year, the frequency and severity of natural hazards is increasing. Coupled with a changing climate and severe environmental degradation, the disaster risks faced by communities living in extremely vulnerable conditions are only magnified. In 2011, a 5-year program, Partners for Resilience, funded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs, was conceptualized. The project aimed at reducing the impact of natural hazards on the livelihoods of around 400,000 vulnerable people in Ethiopia, Uganda, Kenya, Mali, Indonesia, India, the Philippines, Nicaragua, and Guatemala. Implementation of PFR was undertaken by a consortium of 5 partners. It is the fundamental belief of the 5 partners that resilience plays a central role in dealing effectively with disasters. In India, PFR was implemented in the 2 eastern states of Bihar and Odisha, both having high population densities, low per capita incomes, delayed developmental trajectories, communities living in vulnerable conditions, inadequate disaster risk reduction systems, and institutional mechanisms. The high risk of exposure to hazards, especially floods and tropical cyclones, and severely degraded riverine ecosystems further compounded the disaster risks faced by the communities in these 2 states. PFR thus focused its interventions in the Mahanadi Delta in Odisha and the Gandak-Kosi floodplains in Bihar, both extremely volatile landscapes with a long history of hydrological disasters. The aim was to build resilience among 40,000 vulnerable people by improving the management of natural capital, diversifying livelihood options, and increasing disaster preparedness. One of the main interventions of the PFR projects in Bihar and Odisha was to build livelihood resilience by introducing communities to flood-resilient technologies for agriculture and diversified livelihood opportunities. पहले हम लोग ऐसे खेती करते थे कि मजदूरा लगा देते थे कट्ठा में 2-3 और वो मानते हैं कि हाथ चिटकी से मानते हैं रोपते हुए चला जाता था। लेकिन जब समूह हम लोगों का बना तो वो कहे कि नहीं, उसमें आप लोगों की लागत ज़्यादा लगती है और फसल कम होता है, तो आप लोग ये काम कीजिए कि आप सीरी विधि के द्वारा आप लोग खेती कीजिए। हम उसी प्रकार का किए, लाइन से मानते हैं खेती करना और बहुत कम बिजड़ा लगाए कि उससे 30-35 तक बिजड़ा पैदा हो गया और ऐसे मानते हैं कि उसका कला इतना मोटा मोटा हुआ और उसका फसल भी और उसका बाली इतना सुंदर निकला कि देखने वाले मानते हैं कि बैठकर देखते थे कि हाँ ये बाली है। Farmers were trained in sustainable agriculture practices by collaborating with technical institutions such as Pusa Agricultural University in Samastipur, Krishi Vigyan Kendra, and the Agriculture Technology Management Agency. The farmers were introduced to high-yielding crop varieties for paddy and wheat. प्रथम आम जो धनुआ पंचायत ट्रेनिंग नहीं कि आसिलु गाँव में प्रथम आरंभ कलु छतु चाष 10टा बेड़े पकईलु। घरे रागुले कहले एते अगमला मंजी पैसा खर्च कल किसी लाभ मिल कि नहीं। प्रथम आम कम लाभ पाइलु, तापर आम जो 10-10टा 10-10टा एमती पकईलु, आमर एक्सपेरियंस बढ़ला। तापर आम अधिकरू अधिक लाभ पाइबार आमर मन बढ़ला बहुत पकईबा। आम गोटे बेड़े 30 टंका खर्च करी आम 100 टंका पाइलु, 70 टंका आम लाभ पाइलु, आम खुशी हेलु। दुई 2011 PFR तरफ प्रोजेक्ट तरफ आम गाँव में एक कमिटी गठन करा सभा करा से आम किसी 10 ରୁ 15 महिला उपस्थित होई कता काम बा माछ चाष करी बोली निष्पत्ति करूँ। 12-13 आमको ICZMP तरफ बा गवर्नमेंट तरफ आमको कता काम ट्रेनिंग दि जाता। 13-14 आम किसी काम किसी कार्य कलु, कता कंपानी किसी कार्य कलु। आम घर पिछा 1200 ରୁ 1500 भितर
आम उन्नति करूँ बा लाभजनक हो पार्लु 15-16 सुधा आम कि अधिका उपार्जन करूँ बोली आगु को चेष्टा करूँ बा जारी रखू। सर ब्लॉक सहायता जो मैंने ब्लॉक आसिक आमको ट्रेनिंग दे माछ चाष किसी तालीम देखले तालीम पर आम ब्लॉक सहायता माछ आनिक छाड़ी माछ किसी चाष कर। Formation of farmer clubs, provision of storage and marketing information, and establishment of self-help groups engaged in alternate livelihood generating activities have all led to strengthened livelihood resilience amongst the agrarian communities of the Gandak-Kosi floodplains and Mahanadi Delta Basin in the past 5 years. Ecosystems such as wetlands provide a range of services that help reduce disaster risk as well as secure the livelihoods of dependent communities. Management and inclusion of ecosystems, especially wetlands, in disaster risk reduction planning was most successfully demonstrated in the Kanwar Jheel area. ये कांवर जोतबाग होने से ऊपर हो गया है, इसलिए पानी यहाँ से सब गांव के ओर चले जाते हैं। माल जाल आदमी को परेशानियाँ बढ़ जाती है, समय पर भोजन नहीं मिल पाता है, फसलें सब दह जाती है, पानी पीने का कोई साधन नहीं रह जाता है, चापाकल पर पानी डूब जाता है। लगातार बारिश कम होने के कारण कांवर जब सूखने लगा तो इस इलाके के मछुआरों को भोजन रोटी की समस्या होने लगा। तो हम लोग रोज़गार के खोज में दिल्ली, पंजाब, बंगलौर, विभिन्न बड़े बड़े शहरों में हमारे मछुआरे नौजवान बाहर निकलने लगे और स्थिति यहाँ हो गया कि दयनीय हो गया, भुखमरी की समस्या हो गई। Through efforts made under the PFR project to draw the attention of relevant authorities on the need to conserve and manage the Kanwar ecosystem as a means for building environmental resilience, a management action plan for Kanwar Jheel funded by the World Bank has been developed, and a $10 million project with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India shall commence shortly to implement the management action plan for Kanwar Jheel. बाउंस जंगल कर पान वर्ष कर बाउंस से गछ लटा पत्र से गुड़ा भी सुरक्षित हिसाब से रोचे। ये बाबद जंगल आमको आमर जीवन भाई आम भावुँ जंगल एत उपशम आमको दौर जहाद्वारा कि आम से बहु उपशम उपलब्धि करें। आउ कि आमको साहय कर बाबद आउ उपशम मिल आम आशा करूँ। जंगल आमको बहुत सुरक्षित दूसरी। Community-managed disaster risk reduction looks at enabling communities to be aware of their vulnerabilities and risks, and thereby take self-reliant decisions for risk reduction based on their local needs and circumstances. जून महीना में जब खेती समाप्त हो जाला 15 जून के बाद तब सही बैठक बराबर चालू रहेला, बरसात का डर रहेला तो सूचना वाला लोग वो लोग अपन ड्यूटी दे दियाला, सबके अपना अपना कब पानी आवता, कब बाढ़ आवता, कब कौन आपदा आवता, आपदा बाढ़ आवता एक पहले अस्थायी शिविर लोग शिविर बना दे बजा के कहीं ऊँचे स्थान पर स्वास्थ्य में बस अपन दवा के तात्कालिक कुछ सामान लेके वो अपन रहला। बचाव दल में बालू वो लोग अपन तैयार रहला जे केहू डूबे हुए बूढ़ अपंग बागड़ बा ओकरा के उठा के निकाल के धो दे बा। तो हमनी के जीवन में ये लोग के चलते बहुत फायदा भइल। PFR partners are also actively involved with the government in formulating district-level disaster management plans, in which ecosystem and climate change approaches to risk reduction are being incorporated. Out of the 9 agencies identified for the DDMP process in all 38 districts, Caritas India is one of them, and I think they are doing a wonderful job because their main focus is not only to make a DDMP but also
to build the capacity of the district administration of how to use this DDMP in the future process. So it is not so they are not taking it from one end to another, but they are taking it beyond that. So that is the most beautiful part. And they have also prior experience of making a DDMP of West Champaran, which I think is one of the best DDMP in our state. As a part of the PFR project, villagers were supported to develop village-level risk reduction plans and form village-level disaster reduction committees or VLDRCs so as to undertake contingency planning like mock drills, village-level resource mapping, evacuation plans and others. ये फास्ट एड जीएसपी अंडर भुवनेश्वर जाई 2011 बन्या पर लोक साहय करिया गछ पड़िया माड़ हो जापर ये फास्ट एड माध्यम लोक किसी सचेतन करी बन्या पर लोक औषध लगाया एवं जनवा ये सब ट्रेनिंग नहीं जनइलु आउे 2014 फाइलिन बात्या पर लोक सहयोग करते फास्ट एड माध्यम हुड़ुहुड़ु ये जो महाबात्यार ये लोक साहय देइथिलु ये फास्ट एड लोक किसी मात्रा रे आशु चिकित्सा सहयोग देइथिलु। Capacity building activities are required to build community resilience to disasters. Construction of disaster resilient infrastructure as raised plinth toilets and hand pumps, raised plinth houses, grain banks, seed banks and cyclone shelters further added to the resilience of such communities. As a result, in 2013, when Cyclone Phylin made landfall, villages where risk reduction plans had been developed and implemented and VLDRCs were active were more prepared as compared to other villages. आमर ये गाँटी समुद्र मुहाण पूरा सामने यार भी चतुर्पार्श्वे कादुआ प्राची एवं खरप नदी चतुर्पार्श्वे घेरिकी रही ये संपूर्ण बात्या बन्या यार संपूर्ण माने विपद मूलक ये बात्या बन्या हेले आमे पूरा ये हो जाऊ भयभीत हो जाऊ आमे गाँव में 40-44 घर बास करूँ समस्ते ब्लॉक लेवल ठारू मीडिया पर्यंत समस्ते जोगाजोग करी आउ तापरे 13 मसीहा ठारू साइक्लोन सेंटर टी आरंभ है 14 मसीह साइक्लोन सेंटर पूर्णांग है आउ ये साइक्लोन सेंटर भी ये जो हुड़ुहुड़ु बात्या है 14 से भी आमर 44 घर परिवार समस्ते आसी एटी रहीलु रोषेईवास कर खाइलु 3-4 दिन जाए ये हूँ कथा। Early warning information was more readily available in these villages and community evacuations to cyclone shelters were smoother. In the last 2 years of implementation of the PFR project, the focus was on leveraging funds from ongoing developmental schemes of the government to undertake activities identified in the risk reduction plans. 2011 मसीहा ठारू PFR कार्यक्रम रे मु भाग नहीं बर्तमान गला वर्ष आम चाषी मान 200 एकर जमी केनाल खोलिकी पानी जोगाई ए वर्ष देखिलु चाषी मैंने बहुत उपकृत होती तेणु आउ 300 एकर ए वर्ष केनाल खोलू एवं केनाल खोलिकी पानी शस्य क्षेत्र को जोगवा सहित एवं केनाल करे आम प्लांटेशन करूँ चाषी मैंने बहुत उपकृत होती। आपदा यहाँ पे मुख्य रूप से बाढ़ के रूप में आती है, गंडक या नारायणी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो आपदा से बचाने के लिए हम लोगों ने एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया, सभी पंचायतों में करवाया गया है। या तो स्कूलों से जुड़ा हुआ है या आई मीन टू से स्कूल के पास में है या फिर फील्ड में कहीं एक जगह पे है जहाँ पे कम्युनिटी के लोग बाढ़ के समय खुद का बचाव कर सकते हैं, जिसमें मवेशियों का भी बचाव शामिल है। यहाँ पे शुद्ध जल की व्यवस्था भी की गई है हैंड पंप के द्वारा। और इसके अलावा हम लोगों ने फ्लड कंट्रोल के लिए नाली निर्माण भी कराया है और साथ ही हम लोगों ने कुछ बांध का भी निर्माण कराया है। This would also ensure sustainability of risk reduction planning beyond the project life cycle. हमरो एठी
आगुरु किछि कहार पाइखाना नथिला आम भारी असुविधा सम्मुखीन होलु ये स्त्री लोक मानक बेसी असुविधा पड़ता बाहर को झाड़ा जावाई कि ये बण बुदा जंगल ये झाड़ा बसते कादुआ पंगरे भारी असुविधा होता तेणुक आम जेजे संस्था आसिक आमको सुविधा देले ट्रेनिंग देले कहले एगुड़ा सब ये कर लाट्रिन कर समस्ते। Much of the disaster resilient infrastructure built by the project was funded through developmental programs such as the Total Sanitation Campaign launched by the Government of India. आद्वारा आमर बहुत सारा जो मैंने झाड़ा ये बुढ़ा बुढ़ी समस्ते से झाड़ा गलु पिला छुआ भी झाड़ा गलु जी न जापारे से झाड़ा नहीं भी लाट्रिन पकईलु बाहर बिल्कुल मल त्याग कले ना कहीं आद्वारा जदि किए जीव बाहर को 500 टंका जुर्माना। Funds were leveraged from schemes of the government, with the project playing a catalytic role in ensuring the structural designs are disaster compliant. It is well established that the poorest people in the poorest countries suffer disproportionately. Lives, assets, and crops are lost. Disasters wipe out hard-won reductions in poverty, and communities are caught in a vicious cycle, where poverty creates vulnerability and disasters increase poverty. The PFR vision, rooted in practical experience at various levels, lays out a much-needed change in the way DRR investments are made. Joining forces, encompassing different timescales and wider ecosystems, putting communities at the center, and uniting humanitarian and development focuses are the best way forward for risk reduction.